Okay, Swarnam, let's proceed ahead with your technical snap for strength of material. That is for IOCL, right? Yes, sir. Okay, great. So which part of strength of material you are comfortable? Any part you can start with, sir. Great. So you know there are theories of failure. Yes, sir. Why do you need 5 theories of failure? Actually, sir, when we calculate the stress, we measure it in universal testing machine. And in universal testing machine, the stress that acts is uniaxial state of stress. So in the uniaxial state of stress, we basically find the strength of the material, that is ultimate tensile strength or so. But in the real life applications, the bodies, they do not basically undergo through uniaxial state of stress. They undergo through biaxial and triaxial state of stress. So since there is no basically test where we can conduct such kind of complex stresses, so universal this theories of failure has come handy in that cases where we can. No, my question is, why not single theories of failure? Why so many theories of failure? Okay, that is because of the material. Basically, material is either ductile or brittle, and not all theories of failure goes good with all the type of material. Now I give you a metallic bar. Okay, sir. Painted metallic bar. Okay, sir. How do you know that it is ductile material or brittle material using UTM? Okay, in the UTM, actually, we measure the deformation and load values, and with the help of that, we can plot the stress strain diagram. And depending on the stress strain diagram, we can understand that whether it's a brittle material or a ductile material, depending on whether it extends far from the elastic region. How do you know that? Actually, in the brittle material, this type of the stress strain curve do not extend further the elastic material much, because in the ductile material, after elastic region, there is a lot of plastic region actually. So from that, we can understand that the material is ductile, because in the there is a strain hardening zone, there is a necking zone in the ductile material. So those are the characteristic of the ductile material in the stress strain diagram, which we do not find in the brittle material stress strain diagram. Okay, so this is brittle material or ductile material? Brittle material. Are you sure? Yes, sir. Strain is 20%. Okay. Now tell me, ductile or brittle? Strain 20%. So I'll still go with brittle material, not ductile. Is there any criteria of strain at failure for brittle material? Strain at कितने परसेंट फेलियर पे कितना परसेंट स्ट्रेन अगर हो तो डक्टाइल है, कितना परसेंट हो तो ब्रिटल है? सर मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता सर, सॉरी। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किया है आपने अर्नब? हाँ सर। फेलियर पॉइंट पे कितना परसेंट होता है स्ट्रेन? फेलियर पॉइंट पे नहीं सर, एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे नहीं पता एक्चुअली। अच्छा, अगर मैं एक मोहर सर्कल को पॉइंट बना दूं, ठीक है सर, तो शियर स्ट्रेस कितना होगा? वहां पे बेसिकली शियर स्ट्रेस लगेगा ही नहीं, क्योंकि हर पॉइंट में फिर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कंप्रेसिव होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो टेंसाइल भी हो सकता है। ऐसी लोडिंग कौन से मटेरियल के लिए सही है? ऐसी लोडिंग इज गुड फॉर डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल? सच लोडिंग it is good for brittle material, because then tension is because if it's going through compressive, अगर वो मतलब compressive zone में है, तो वो मेरे ख्याल से brittle material के लिए अच्छा होगा, क्योंकि brittle material is weak for tension. And what about if it is in tensile domain? Then ductile material के लिए सही होगा, क्योंकि फिर ductile shear में वो होता है, weak होता है. Okay. So what is the relation between shear strength and tensile strength? Shear strength and tensile strength. अगर मैं बेसिकली MSST जो कि एक theories of failure है, maximum shear stress theory, उस हिसाब से जो shear strength होता है, that is half of the tensile strength. Okay, both for ductile and brittle?
material, one second sir, let me, yes sir, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, वो थियरीज ऑफ फेलियर, मतलब वो एमएसएसटी एक्चुअली डक्टाइल के लिए वैलिड ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो इट वुड गुड गो गुड अगर मैं आई गिव यू माइल्ड स्टील बार जिसके ऊपर गियर माउंट है, ओके सो हाउ शैल इट फेल? माइल्ड स्टील बार गियर माउंट है, तो अगर वो गियर माउंट है तो मैं ये सोच सकता हूँ कि टॉर्शन स्ट्रेसेस वहाँ पे लग रहा होगा, और डक्टाइल है तो वो ऑब्वियसली शियर के लिए ही फेल होगा, और अगर मैं उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस जानने का कोशिश करूँ कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ से फेल हो रहा हो, तो जिस पॉइंट में फेल होगा वो बेसिकली मतलब जिस प्लेन में शियर स्ट्रेस लग रहा है उसी प्लेन में फेल होगा, क्योंकि बेसिकली वो Tell me how it will fail then. ओके सर लेट मी, Where is the failure plane? ओके सर आई विल से जो बेसिकली अगर शाफ्ट है, शाफ्ट का अगर मैं आउटर सरफेस में देखना चाहूँ तो आउटर सरफेस में टॉर्शन के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है, और वो बेसिकली क्रॉस सेक्शन के बराबर ही फेल होगा, क्योंकि उसी पे मतलब टॉर्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है। It आई will कैन fail शो at 0 degree. Huh? 0 डिग्री सर। Okay. So can you tell me what is the impact factor? यस सर, इम्पैक्ट फैक्टर हम लोग तब लेते हैं जब लोडिंग जो है वो इम्पैक्ट लोडिंग के लिए आ रहा है, एंड दैट इज we can calculate, but I remember the formula that is equal to 1 plus over root 1 plus 2h by delta static. So okay, so how the stress is different when you apply load with impact? बेसिकली स्ट्रेस मतलब जब हम लोग इम्पैक्ट लोडिंग लेते हैं तब हमें एंटायर वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है कि मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जितना डिफॉर्मेशन एनर्जी है, उन दोनों को ऐड करके हम लोग देखते हैं कि कितना एनर्जी इम्पार्ट हो रहा है, तो उस If हिसाब I से apply different kind of load, if I loading type अगर मैं change कर दूं तो stress strain diagram will also change. obviously sir it will change sir, because हम लोग So have यूनिवर्सल you seen a stress strain diagram of mild steel for different kind of loadings, different stress strain diagrams? फॉर डिफरेंट लोडिंग तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम बेसिकली यूटीएम तो जो वो टेंसाइल के लिए दिया रहता है। नहीं, मैं टेंसाइल लोड को ही अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेजुअली एंड विद सडन लोडिंग एंड विद इम्पैक्ट. Will you get 3 different stress strain diagrams for mild steel? I'm not sure sir. What is section modulus? Section modulus is I by y max. I is the area moment of inertia about the Tell me its center. significance. Okay, it basically helps us in understanding how the beam is how stronger in bending or not, how much the beam is stronger in bending, because if the section modulus is high then it is more strong in bending actually. आपके रूम में जो बीम पड़ा हुआ है इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? क्रॉस सेक्शन मतलब रेक्टेंगुलर हो सकता है, आई सेक्शन तो घर पे नहीं होता बेसिकली, लेकिन रेक्टेंगुलर ज्यादातर होता है। Why not I section at home? No sir, I do not know the particular reasons, sorry. Okay, Arnav, let me give you the feedback. See, Arnav, your level is good, okay, but the most ticklish question you are not in position to answer. Yes, sir. I don't remember all the question I asked you, but let me give you the answer to some of the questions. Yes, sir. जो mild steel है वो actually tough material है, tough or ductile you can say. It feels like a tough or ductile material, right? So when you mount a gear on it, there is a torque applied. So the typical loading diagram is shear stress, torsional shear stress applied. Okay. So if on UTM you apply tensile loading, so ductile material subjected to tensile loading will fail at 45 degree. Yes sir. Ductile material subjected to pure shear will fail at 0 degree. Yes sir. So that your answer was correct. That was the right answer, right? Yes sir. Then Mohr circle of point load, that answer was also correct. If it is compressive side, better it is for brittle material. If it's tensile side, it is good for ductile because ductile fail in shear and their shear strength is almost half of the tensile strength. That is also correct. Yes sir. Then how do you know whether it is ductile or brittle?
You'll say, sir, I will take it on the stress strain diagram, UTM, and draw its stress strain diagram. So there is a Okay. parameter. If failure point pay at the failure point, if the strain is less than 5%, it is normally considered as brittle. Okay. So how do you know from stress strain diagram whether some material is brittle or ductile? You will say, sir, let's calculate the strain at failure point. If it is less than 5%, it is brittle. So failure का मतलब क्या फ्रैक्चर होता है यहाँ पे? फ्रैक्चर, फेलियर का मतलब फ्रैक्चर नहीं होता, हम फ्रैक्चर पॉइंट की बात कर रहे हैं. अच्छा हाँ फेलियर का मतलब यील्ड होता है इंजीनियरिंग में. हाँ हाँ. लेकिन हम फ्रैक्चर पॉइंट की बात कर रहे हैं. फ्रैक्चर पॉइंट पे स्ट्रेस कितना है आपका स्ट्रेन, ये देखो. अच्छा वो अगर वो 5% 5% से कम है हाँ तो वो ब्रिटल है. अच्छा. एक्चुअली क्या था, ब्रिटल के अंदर यील्ड पॉइंट एंड अल्टीमेट पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर वेरी क्लोज. प्लास्टिक रेंज नहीं होता, इसलिए 5% से कम ही रहता है. अच्छा अच्छा. माइल्ड स्टील में 25% होता है जहां पे फ्रैक्चर है. अच्छा 25% फ्रैक्चर है. सो डक्टाइल में डिस्टेंस बिटवीन यील्ड पॉइंट टू अल्टीमेट पॉइंट टू fracture point is huge. That is a plastic range. yes sir. Different theories of failure, because to predict the failure properly for different materials, so different theories. Like ductile failure in shear, brittle failure in direct loading, that is the reason. Yes, so it's a good, keep preparing, go for more snaps. This is good practice.